online some AI. I'm all set with my water bottle in my hand and my desk right there. Or it's fun. It's fun to see how AI is so powerful already. Hi guys, it's early morning. 6:15 बज रहे हैं and I am off to a park nearby my house and it's insanely humid today. बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एयर इज सक्ड आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और सब कुछ ऐसा शांत सन्नाटा. देयर इज नॉट वन पर्सन आउट. ऐसा जनरली ओ माय गॉड दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्री. आई एम गोना शो यू. लुक एट दिस प्रीटी वन. बहुत सारे फूलों के साथ. हाँ प्रीटी. सो ऐसे मौसम में जनरली लाइक ऐसे जब एकदम घमस हो रही होती है, उमस हो रही होती है, तो उसके बाद जनरली सब बारिश हो जाती है. आई जस्ट होप कि बारिश तब तक ना हो जब तक मैं घर के बाहर हूँ. वी आर नाइस पीपल. वी डोंट pick flowers from the tree, but who is gonna stop us from picking this little one over here जो गिरा नहीं है. Thank you, beautiful big tree, for this beautiful flower. And I found this little one as well to accompany it. Actually, there's like so many cute ones which are just fallen down. I think ऐसा सुबह सुबह गिरे हुए हैं. We got a bunch now. This is reminding me of my college days when I used to get back home and I always had a bunch of flowers in my hand. मैं बहुत सारे फूल कलेक्ट करती थी तब यहाँ वहाँ से. Oh, I'm trying to understand which way I'm supposed to go. This way. इतना लंबा टाइम हो चुका है कि मैं यहाँ गई नहीं. So I've been planning and then procrastinating going to the park from quite some time now, but हो ही नहीं पा रहा था यार. मतलब मैं प्लान करके अपना बैग बना के सोती. जनरली ऐसा होता है कि मैं बहुत लेट सोती हूँ और फिर वर्कआउट करने के बाद वैसी बॉडी बहुत रेस्ट मांगती है, तो आई जनरली बार्गेन विद माई सेल्फ इन द मॉर्निंग एंड आई कीप ऑन स्लीपिंग. बट टुडे समहाउ आई पुश्ड कि नहीं, थोड़ी देर पार्क चलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डे आई एम गोना स्पेंड ऑन माई लैपटॉप ऑन द संडे trying to study something. So yeah, I need to feel like this is the weekend. Hence I'm out. Tempted to pick up some more over here, but I'll try not to because dude, I'm not out. Oh my god, it's just like one flower, that one just fell right now. I'm tempted to pick it, but I'll just move on because flower hunt हमारा पर्पस नहीं है. हमारा पर्पस है पार्क पहुंचना. दिस झोला जो मेरे कंधे पे से लटक रहा है क्योंकि मैं इसका हैंडल ठीक भी नहीं कर पा रही हूँ. मेरा हाथ ऑलरेडी फुल है. ठीक है, ऑलमोस्ट देयर. I've got my yoga mat. I might do a little bit of stretching and हम पार्क आ गए हैं. Look at the number of cars and bikes, guys. लोग यहाँ तक गाड़ी से आते हैं फिर अंदर आके चलते हैं. Oh dude, look, there's full-fledged like groups of yoga going on. Still काफ़ी शांति है यहाँ. सिर्फ चीची चूचू चिड़ियाओं की. And I need to find myself a nice spot to sit. So we're gonna walk to a place where I feel I can put my yoga mat and get started. It's
very beautiful. I think I'm gonna plant myself over here, somewhere over here. It's a nice place to sit, less crowded, very, very green, but it's extremely humid. And we're here finally on the mat, planted on the grass. I really hope it doesn't rain because यहाँ कहीं पे अच्छा नहीं शेड तो है छुप सकते हैं भाग के. Bye people. Yeah, I hope it becomes a little like tiny bit windy, just teeny tiny windy because I'm sweating and I've not even started yet. um, I think I'm gonna get into some stretching, some yoga, and after that I am gonna probably journal or read something. मैं अपने साथ एक बुक कैरी कर रही हूँ और एक जर्नल कैरी कर रही हूँ. Actually, I'm gonna give you guys what's in my bag tour now. My mom upcycled this one. It's made out of my old palazzo pants, and yeah, it's very pretty. इसमें मम्मा ने crochet करके cute सा flower pot बनाया है, which is so cute. And yep, let's dig in inside and show you. So we have our water bottle to stay hydrated, of course, and then we have my journal right here. So we're gonna do some writing today, and I also have a book. So it's a light read, not a storybook or anything, but just a poem book, Hidden Music, Rumi. So it's poems by Rumi, and I'm just gonna go read a few. I really like this kind of stuff when I don't have to focus too much on the book. थोड़ा बहुत book देखा, थोड़ा बहुत environment अपना देखा, and yeah, ऐसे चल गया. So ये सब कुछ है. What else am I able to get out? Okay, my JBL of course, and I have my tripod in case I want to like take some shots using it. Okay, and then I have probably some stationery. Okay, yeah, I have 3 pieces of stationery and 1 gloss. Pause. So, ये रहा मेरा cute सा highlighter, black pen, a pink pen because I can never go out with one color, so I've got 2. And this lip balm, yeah, because I have chapped lips in the morning at times. So bas, this is gonna be my chilling in the park armory. Hi there. Do you want to be friends with me? Nine. She's too busy minding her own business. Before I get into it, I'm gonna tell you something very funny. So मैं जब इस साइड आ रही थी ना, मुझे एक weird सी आवाज़ आ रही थी, ऐसे जैसे कोई ऐसा demon, कोई dragon बैठा हुआ है. Yeah, so I was getting that sound, very weird sound like I can't even replicate it, but ऐसा अजीब सा ऐसी साउंड आ रही थी. तो मैं ना देख रही थी आसपास कहीं कोई बंदर, कोई डॉगी, क्या है, कहाँ से आ रही है आवाज़. आई रियलाइज दैट देयर इज़ वन अंकल सिटिंग ऑन लाइक द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द पार्क. और वो शायद कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड ही इज़ डूइंग दैट, ही इज़ मेकिंग दैट साउंड. It's funny, but yeah, at least good to know that I'm not gonna be attacked by a beast. बहुत normal सा stretch routine किया मैंने, because it's not like I have a off day to gym. I will go to gym in the evening. तो वहाँ जाके जो काम करना है वो तो करा जाएगा. अभी बस थोड़ा सा स्ट्रेच किया है. I'm already sweating like anything. I'm gonna calm myself down, and then I'm gonna start reading and
writing something. अब थोड़ा थोड़ा sun भी दिख रहा है, so it's gonna get even more humid. Ouch. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. So I'm reading this one, and इसमें like wherever the word lover is coming, so that is generally like in Sufi and I think in Rumi's poet, that like he's referring to God when he's saying lover. So yeah, at first glance like you might not be able to get it, but he's talking to God basically. Read this one day, it's very beautiful one. I have come to drag you out of yourself and take you in my heart. I have come to bring out the beauty you never knew you had and lift you like a prayer to the sky. If no one can recognize you, I do, because you are my life and soul. Don't run away. Accept your wounds and let bravery be your shield. It takes 1,000 stages for the perfect being to evolve. Every step of the way, I will walk with you and never leave you stranded. Be patient. Do not open the lid too soon. Simmer away until you are ready. In this game, I make the rules. I roll you like a ball and chase you when I choose. Once the god speaking to the devotee, I understand from this one. We found another one, and here also beloved means the higher power. If you befriend the beloved, you will never be lonely. If you learn to be flexible, you will never be helpless. The moon shines because it does not escape the night. The rose is scented because it has embraced the thorns. Pretty self explanatory and really beautiful. So I'm on my way, but I'm gonna go and look if the swings are free. अगर वहाँ सुबह सुबह कोई बच्चे नहीं है, जो कि मुझे लग नहीं रहा पॉसिबल होगा, यहाँ बहुत लोग हैं, बट अगर वहाँ बच्चे नहीं हैं तो मैं थोड़ी देर बैठ के स्विंग पे झूल के फिर घर जाऊँगी. सो आई थिंक जो पार्क के पास वाले स्विंग्स होते थे ओरिजिनल, जो मेरे माइंड में था प्लान, वो हट चुके हैं. तो मैं कॉलोनी में ही कहीं स्विंग ढूंढ रही हूँ. My intrusive thoughts went on my way back and I picked up this one that fell. मेरे लिए गिरा था यार वो. Part of my motivation was that I want to see flowers, and I got to saw so many beautiful trees full of flower. एक ये वाला भी उनमें से. There was one more that I wanted to take photo or video of, but I did not do that because वो किसी के घर का पार्ट था, मतलब किसी के आंगन में था बिल्कुल. एंड वो बेल वाले फ्लावर्स होते हैं ना, जो ऐसा थोड़ा सा लटके होते हैं पिंक एंड वाइट कलर के, तो गुच्छे के गुच्छे उस पेड़ के ऊपर इतने सारे थे. आई जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड दैट ट्री. यू लुकिंग ब्यूटिफुल, यू लुकिंग गॉर्जियस. दैट इज़ द स्विंग दैट आई एम गोना हाईजैक नाउ. मेरा प्लान हाईजैक कर लिया है स्विंग ने. इस पर स्विंग है ही नहीं, ये सिर्फ डंडा है. फाइनली गॉट द स्विंग आई वाज looking for. I'm a little scared because the grass is too tall over here and this is like a rainy season. तो मुझे डर लग रहा है कीड़े मकोड़ों से और अनफ्रेंडली फ्रेंड्स से. अगर कोई लिटरली मुझे देखता कि मैं वहाँ से कैसे कूद कूद के निकलूँ तो बहुत हंसता. बट यार ऐसा वॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं अभी ना पार्क में, गार्डन में, हर जगह. फिक्स फॉर आवरसेल्व्स दिस लिटिल बुके अरेंजमेंट. आई एम नॉट श्योर अगर ये सर्वाइव करेंगे. थोड़ा टाइम तो सर्वाइव करें ये फ्लावर्स. बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं गिरने के बाद में, और
थोड़ी देर मैंने इसे पानी में डाल दिया है. I'm gonna keep it over here right next to my crystals.